जी। सो अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? वन लास्ट थिंग आई थिंक इन दिस इज एफिशिएंसी है, और क्या है? हाँ, एक और चीज़ है एफिशिएंसी। विंड पावर एक कैलकुलेट करने के लिए आती है। विंड पावर, क्या आस्क यू टू, क्या विंड पावर कह लें, या पावर एनी एक्चुअली फ्लूइड, any flowing object colliding with something converts its power. For example, a jet of water hitting something, so it brings some power. So how to calculate that power? For example, there is wind or jet of water hitting this surface. Its length is d. It's moving at a speed v. So in time t, this jet of water or wind hitting the surface. So wind power is actually in the form of kinetic energy. So its rate of change of kinetic energy. We are assuming that after it collides the wall, wind comes to rest, or the jet of water comes to rest. So its change in kinetic energy is half mv square minus 0, because its energy is 0 after it hits the surface. Power is rate of change of kinetic energy divided by time. So I can write it as mv square upon 2t. Now m को I can write as mass is density into volume. This is volume, and volume is area, area over which it's colliding, it's hitting the surface, into its ये area or ये distance. This gives you volume, right? This is the formula for mass. अच्छा, टाइम बराबर है किसके? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो बस इस फॉर्मूले में टाइम और एम की जगह ये रखना है। क्या आ जाएगा? पावर इज एम की जगह रो ए डी वी स्क्वायर एज इट इज, अपॉन टाइम की जगह 2 और टी की जगह डी अपॉन वी। ये वी ऊपर आ जाएगा, डी से डी कैंसिल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर 1/2 रो a v cube. This is the formula for power. इसमें rho is density, rho density of wind, of air, or if it is water, water की a area of cross section जिस पे hit कर रहा है, over which air is hitting. It's actually area of the blades, क्योंकि mostly we calculate power for for the wind, जो कि windmills होती है ना. So windmills, you know, they have their area. So windmills की जो blades होती है उनके area का, उनके जो cross section होता है blades का, that is considered as A. So they give you कि wind is striking this area of the windmill. So A will be given. Now with what speed it is striking, ये भी आपको given होगा. तो this is speed of wind or speed of air, right? So ये आ गया आपके पास formula for power 1/2 rho a v cube. Wind power होती है. All right, and one last thing, interconversion of electric and potential energy. बस फिर ये आज ये chapter खत्म. Interconversion of electrical क्यों कह रहा हूँ,
kinetic and potential energy. Interconversion of kinetic and potential energy. So इसमें क्या है, if you drop something, कि इसकी यहाँ पर suppose it has speed u, अच्छा वो zero भी हो सकती है. At a certain height this object has speed u. When it hits the ground its speed is v. So relation क्या है, if there is a friction also acting throughout resistive force भी है, let's suppose F. So at this point इसकी potential energy EP is max, and at this point EP is minimum or zero. So actually potential energy is converted into some other forms of energy. कौन सी form of energy में गई है? So if you look here, its kinetic energy at this point is minimum or zero, depend के u की क्या value है. While at this point, its kinetic energy is maximum. So if there is no friction, if F is zero, then we know that change in EP is equals to change in EK. यानी जो भी initial potential energy है -1, just take it EP dash और इसको EK और इसको EK dash इस तरह से ले लेते हैं. So this gives you change in potential energy is EP minus EP dash. EP is the potential energy at the maximum height, which is maximum, and EP dash is the potential energy at the minimum height. That could be zero if it's all touching the ground, तो zero भी हो सकती है. Otherwise हम इसको general value लेके minimum क्या देते हैं. So we subtract body energy from the smaller energy. Now this is equals to change in kinetic energy. अब kinetic energy कहाँ पे बड़ी है? EK dash ज़्यादा है, so it's EK dash minus EK. For energies, for calculating change in energy, remember we always subtract bigger value from the smaller value. It's not final minus initial, it's always bigger minus smaller. So potential energy initially bigger थी इसलिए मैंने initial potential energy को पहले लिखा. Kinetic energy finally bigger थी इसलिए मैंने final kinetic energy को पहले लिखा. So this gives you a formula. आप लिख सकते हैं mgh EP को you can write mgh लिख सकते हैं आप, और हाँ अगर हाइट डैश है, और EP डैश पे जो भी हाइट है वो लिख सकते हैं. आई डोंट नो इफ इट इज mgh डैश, सपोज दिस इज h डैश है थोड़ी सी हाइट, और इफ इट इज जीरो तो जस्ट राइट इट जीरो. इसी तरीके से EK डैश is half mv square minus EK is half mu square. Normally u zero होता है, so the formula may become, अच्छा m से m cancel हो जाएगा most of the time, so this become gh equals to half v square. m से m cancel हो जाता है. I am considering कि if h dash and u is zero, तो ये situation आ जाएगी. अच्छा, if friction is not zero, if f is not zero, तो क्या होगा, ख्याल रखिएगा. नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सारा का सारा काइनेटिक में नहीं जाएगा, बल्कि काइनेटिक प्लस वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस. क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अब सिर्फ काइनेटिक में नहीं जा रहा है, बल्कि दो चीजों में जा रहा होगा. गॉट इट? यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 12 जूल है
और मैंने देखा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो गई, लेट्स सपोज यहाँ पे काइनेटिक 0 थी और यहाँ पे काइनेटिक 9 जूल्स हुई है. So where is the 3 joule has gone? It must have been wasted as work done against resistive forces. So you have to add that 3 joule into the change in kinetic energy to get the total change in potential energy. All right. And if object is thrown, this is when it's falling down. If object is thrown upward, if object is thrown upwards, तो क्या होगा? यानी यहाँ पर उसकी इनिशियली एनर्जी स्पीड v होती है, टॉप पे एनर्जी u हो जाएगी एंड देन या 0 हो जाएगी. सो अब उसकी यहाँ पे के EP सिचुएशन तो वही है कि यहाँ पे इनिशियली EP मिनिमम है, के मैक्सिमम है, और यहाँ पे EP मैक्सिमम है, यहाँ पर के मिनिमम है. सेम थिंग. नाउ EK is converting into EP. ये कब होगा? If resistive force is 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी. And if resistive force is not 0, so सारी की सारी kinetic energy won't be converted into potential energy. Part of it will be converted into work done against resistive forces. So ये बहुत important है कि आपने ये resistive forces का जो work done है, F into H, D कह लें, H कह लें, किस साइड पे आपने इसको ऐड करना है? F dot H. So if you are throwing it upwards, kinetic is converting into potential, so you have to add this work done against resistive force on that side. Potential energy की साइड पे ऐड करें, या ये कहें kinetic energy में से subtract करें. If potential is converting into kinetic, यानी if it is falling down, नीचे आ रहा है, so now you have to subtract work done against resistive force from the potential energy. Got it? Any question? ये आपको जो है वो देखना है कन्वर्जन में से क्वेश्चंस आते हैं. सो परसेंटेजेस की फॉर्म में सम टाइम कि कितनी हाइट ड्रॉप हो गई, इतना हाइट बाउंस होगा. करते हैं क्वेश्चन, काम करें, ज्वाइन करें, 1 मिनट रह गया. सो कॉपी कर लें, देन ज्वाइन अगेन, वील डू अ क्वेश्चन.